Welcome dear students, this is lecture number 11 and in previous lecture we start chapter number 3 and which is related to the winds and cyclones. So in previous lecture we discussed winds and cyclones and their definitions. So today we are going to discuss one of the topics which is related to this chapter and which is on page number 13, that is anticyclone and tornado. Okay, so what is anticyclone? अच्छा, एंटीसाइक्लोन किसे कहते हैं? जैसे कि हमने पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में, साइक्लोन इज अ काइंड ऑफ स्टॉर्म, अ काइंड ऑफ, इसको हम तूफान कह सकते हैं, समुद्री तूफान, यानी जो कि समंदरों में तूफान होता है. अच्छा, सो एंटीसाइक्लोन क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइक्लोन. सो द डेफिनेशन ऑफ एंटीसाइक्लोन इज दैट in an anticyclone the winds go round in a clockwise direction in the northern hemisphere and the opposite direction in the southern hemisphere. Understand? यानी कि ये क्या करते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर. अच्छा, क्या कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज होता है, जैसे कि बुक में भी है, पेज नंबर 13 में देखें. Look at this picture. This is the picture of anticyclone, जो कि क्या करता है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बिल्कुल क्या होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होते हैं? साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होते हैं. ये कहाँ पर? समंदर में. अच्छा, फिर कहते हैं द हाई प्रेशर ऑफ एन एंटीसाइक्लोन